एंड देन ऑफ कोर्स स्काई का आपने जिक्र किया, मुझे तो लग रहा है किसी और प्लेनेट से आया है. He is totally different than anybody else. I mean, the amount of runs he's got this year, I think he's the only batter with 1,000 runs in T20 in 2022. Yep. He's the first Indian batsman to score 1,000 runs in T20 in any year. He scored 50 of 23 balls, with the fourth fastest 50 for India in T20 World Cups. It's just treat to watch. Yeah, just unreal stuff there. Not just against Zimbabwe, against the top bowling attack of the world. And you know, look at this shot, unbelievable. बॉलर जाए तो जाए कहाँ? बॉलर जाए तो जाए. देखना यार ये. This is just fearless. सिर्फ क्या fearless ही कहेंगे टैलेंट के साथ कि डरना नहीं है, गेंद लग भी जाए. मैंने अपनी मतलब मजा आता है देखने का ऐसे लड़के को. टोटली बिल्कुल वकार ने सही कहा कि ऐसे मौके पे बॉलर जाए तो जाए कहाँ. जाए तो जाए कहाँ? ड्रेसिंग रूम. I mean, look at that. I mean, But he's not going to dressing room. Look at these shots. मसला ये है कि इशू ये नहीं कि ये शॉटें बड़ी मारता है या छक्के मारता है या चौके मारता है. It's just that everywhere he is. He's 360 degree. I mean, look at all those boundaries. उसने यहाँ पे स्कूप शॉट भी खेल दिया, एक्स्ट्रा कवर भी खेल दिया, बैकवर्ड पॉइंट पे भी खेल दिया, सीधा भी मार दिया. You see? I mean, then how? I'm just trying to think what's the best way to get him out in T20. One day probably a test match में तो one can plan against him. But in T20 cricket, because आप वैसे as a bowler, you're always on the back foot, and if someone is in such a good form and such a dominant kind of nature का जो batsman होता है, it is very difficult to bowl at him. Yeah. And Pakistan in the previous game did well against him. They really bombarded him with the bounces. Right. And I think maybe that's the only way to go. And I hope Pakistan plays India in the final here in Melbourne. Melbourne की pitch भी थोड़ी spicy है, so that'll be a good game. सॉरी शोएब, you wanted to ये add? वो वाला स्टूडेंट है, आप स्कूल में जाए ना तो आपने सारा होमवर्क किया हो, आपको पता हो कि यार मैं आई एम फुली प्रिपेयर्ड, तो जब आपके मास्टर साहब पूछते हैं ना नाम लेके तो सबसे पहले आवाज़ आती है जिसने सारे काम किया था, हाजिर जनाब. राइट. ये वो है कि मतलब उसने पूरा होमवर्क किया हुआ है, उसको पता है कि मैंने. और मिडिल ऑर्डर में खेलना, आई गेस ही इज़ द प्राइम एग्जाम्पल कि ये दूसरों के लिए भी बहुत अच्छा लेसन है कि जहाँ से फील्डर ऊपर आता है वो उसको वहाँ टारगेट करता है. ठीक है, क्योंकि उसे भी पता है ऐसा नहीं हो सकता रोज़ रोज़ ये 4 बॉलों पे 4 छक्के नहीं लगते, 6 नहीं लगते, 3 नहीं लगते, क्योंकि बॉलर्स हैं वो भी वेरिएशन बहुत सारी करते हैं. तो उसकी यूटिलाइजेशन ऑफ हिज शॉट्स सिलेक्शन इट्स ब्यूटीफुल. और उसने उस पर हम लोगों ने उस दिन उसका इंटरव्यू भी देखा था कि उसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसेस की हुई है, तो इसीलिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट.